ओम 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 सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ओम नमस्ताराय नमः शंभवे च मयो भवे च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या भक्ति विद्या योग विद्या धर्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। परब्रह्मणे श्रुति मात्रे समस्त ब्रह्म विद्या भक्ति योग धर्म विद्या आचार्येभ्यो ऋषिभ्यो मुनिभ्यो गुरुभ्यो देवताभ्यो नमः। ओम सीतारामाभ्यां नमः ओम श्री महामहेश्वराभ्यां नमः ओम श्री वशिष्ठ विश्वामित्राभ्यां नमः ओम श्री वाल्मीकि तुलसीदासाभ्यां नमः ओम श्री वेदव्यास महर्षये नमः ओम श्री रामचंद्र स्वामिनः भक्तेभ्यो श्रीरामायण शास्त्राणाम् आचार्येभ्यो अस्मद् गुरुभ्यो नमः। तेषां सर्वेषां कृपानुग्रहेण उपनिषदुक्त ब्रह्मात्मैक्यबोध पुराण इतिहासोक्त भगवद्भागवत दर्शन अनुग्रह सनातन धर्म विश्वव्याप्ति विश्व आध्यात्मिक प्रगति शांति एकता अस्मिन् धर्म संस्थापने निश्चित अस्माकं दिग्विजयार्थं श्री ब्रह्मांड पुराणान्तर्गत अध्यात्म रामायण शास्त्रस्य पारायणम् अध्ययनं श्री बाला त्रिपुर सुंदरी मातुः सहस्रनामावल्याः पारायणं देवी स्तोत्राणां पारायणं वयं सर्वे करिष्यामहे। आदौ श्रीराम नाम संकीर्तनम्। ओम श्रीराम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम जय जय राम। ओम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्ये च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ओम श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नमः। श्री ब्रह्मांड पुराणान्तर्गत अध्यात्म रामायण शास्त्रम् उत्तरकाण्डं पंचम सर्गः। श्रीराम गीता श्री महादेव उवाच श्रीराम उवाच। मित्रों, chant from 52 to 56. Enough. Start. एवं सदा जात परात्म भावनः स आनंद तुष्टः परिविस्मृताखिलः आस्ते स नित्य आत्म सुख प्रकाशकः साक्षात् विमुक्तोचल वारि सिन्धुवतु। एवं सदाभ्यस्त समाधि योगिनः निवृत्त सर्वेन्द्रिय गोचरस्य हि विनिर्जिताशेषरिपोरहं सदा दृश्यो भवेयं जितषड्गुणात्मनः। ध्यात्वैवमात्मानमहर्निशं मुनिः तिष्ठेत् सदा मुक्तः समस्तबन्धनः प्रारब्धमश्नन् अभिमानवर्जितः मय्येव साक्षात् प्रविलीयते ततः आदौ च मध्ये च तथैव चान्ततः भवं विदित्वा भयशोककारणं हित्वा समस्तं विधिवादचोदितं भजेत् स्वमात्मानम् अथाखिलात्मनाम् आत्मन्यभेदेन विभावयन्निदं भवत्यभेदेन मयात्मना तदा यथा जलं वारि निधौ यथा पयः क्षीरे वियत् व्योम्नि अनिले यथा अनिलः। ओम शांति शांति शांति। ओम श्रीराम शरणं मम
Shri Rama Sharanam Mama, Shri Vyasa Sharanam Mama, Shri Vyasa Sharanam Mama, Shri Sadguru Sharanam Mama, Shri Sadguru Sharanam Mama, Shri Rama Sharanam Mama, Sharanam Mama, Sharanam Mama. Friends, just 2 minutes bird's eye view is Adhyatma Bhavada is being taught to us. The so many of Atma Swarupa Lakshanas are given for Vicharana contemplation. But to be able to contemplate on the self, we have to have a status inside us. And the status is total freedom from the world and worldliness and all the things related to world. In short, the world and worldliness should disappear from us for the spirit and spirituality to pro, to totally prevail in us, overwhelmingly, overpoweringly, isn't it? Just like in Vyavahara also. Any very, very important work taken up by us, so that prevails. All our Antakarana, Alochana, Vyavahara, all is around that only. All other things become negligible. एक घर बनाना है. अब देखो those 2.5 साल for that person, whole mind's thoughts are all the time regarding that only. Nothing else. All other secondary minute. So to a company start करनी है. Oh, totally. अभी elections आ रहे हैं. Everybody is interested in how to win the election. बाद में लोग और उनका कोई अभी सोचेगा नहीं. Till those elections are over. Same way World Cup. अब कल semi-final India. And the whole team, dressing room, that particular departmental people, उनके लिए वही होता है. Nothing else. So to overpoweringly, all overwhelmingly, only spirit and spiritual thought has to happen in and around us. For that, everything other than it, obviously, the gross and subtle world should disappear, get dissolved. For that, we are taught the Pranava Upasana. Pranava Upasana, as taught here or Mandukya or any of the Upanishads, when done, the outcome of it is that the whole world loses its important significance. World of all three planes at both levels. Three planes are Jagra, Sapna, Sushupti, Stula, Sukshma, Karana. So to two levels means the Vyashti and Samashti level. अब देखो जब बता रहा है कि ओंकार उपासना से you can merge the whole thing in the Om and Om in Brahman, thus should it not reveal to us this subtle secret point is only upasana नहीं करने के कारण the whole world is appearing to be real with all its magnitude or magnanimity, otherwise it's nothing but Om, as small as Om. Again, like sometimes an object or a person and a project overwhelmingly occupies our heart, then हमको सब कुछ वही लगता है ना. अकल आ गया मानो या टाइम स्पेंड किया. When you think to drop it and you drop it, whole thing goes away. Isn't it? करते भी हैं हम कुछ. Sometimes suddenly it may not happen, but you are involving in this or that. देखते देखते 6 महीने 1 साल हो गया. That which is so important. It can be an issue, it can be a problem, it can be a person, it can be a project, it can be an experience. Zero हो जाते हैं. At that moment, as much value we give, so it big appears. But in the power of time, in the sequence of events, nothing remains. है कि नहीं. कितने भूकंप या रेल एक्सीडेंट होते हैं, कितने परेशान होते हैं. बार तो कुछ महीने बाद और एक होता है, उसमें ये भूल जाते हैं. Sort of big personality dies. We become so disturbed. Yeah, Oberoi, Mr. What a Oberoi group of hotels is started and brought such laurels to our country in the hospitality zone. He died.
or Oberoi group, whoever, yes, but other will come. Some other group chain of दुनिया तो रुकता नहीं ना. At that time it appears to be great. Same way, real great thing is substratum परमात्मा only. इसे उनको ही ग्रेट मानो. उनमें से मिथ्या से आरोपित जगत का आना रहना चेंज होना मरना, अर्थ इज रियल. थाउजेंड्स ऑफ प्लैनेट्स कम स्टे गो. अरे क्या है उसमें. ऐसे ब्रह्मांड अनंत कोटि like ripples bubbles in the ocean come in the pure conscious self and disappear. But this is how when we think the extra value reality given to the world, and then those thoughts of world in the mind breeding the raga dvesha kama krodhadi durguna, enslaving us to those moods. From all that kachra we are freed. Such mind intellect alone can contemplate on true self reality, in the heat of which we transcend all sthula sukshma karana vyashti samashti and see that substrate. That's why Omkara Upasana, Pranava Upasana was taught. How much anything, any number of times taught, it is our contemplation which gives clear understanding. How much ever the clear understanding we have and give that understanding to others through pravachana. Yet, whoever does whatever amount of sadhana, that alone amount will be his result and his progress in sadhana toward the siddhi. इसलिए न सुनने में रुकना है, न विचारणा करने में रुकना है, न समझने में रुकना है, न साधना में रुकना है. अनुभव आने के तक, अनुभव आने के बाद भी नो रुकना. We become instruments in the hands of the Lord, as we saw in our morning the Aitharya Upanishads 28 minutes of introduction. Then here Bhagavan Rama says, in this way, Vishwa in Akara, Tejasa in Ukara, Prajna in Makara. Vishwa and Akara both in the Ukara Tejasa. Ukara Tejasa in Makara Prajna. Makara Prajna in Shuddha Atma. You merge it. When it is said, it means it can be done. When it is said, it means when one tries to do, it will happen and the Ishvara Guru Krupa will be there while doing that. Therefore, keep doing. The door will get opened जब का तब. लाइफ में वेदांत में एक ही बात है, जितना फोकस ऑफ फ्लड लाइट है वहां तक पहुंचो, आगे का फिर से अपने आप ही और फ्लड लाइट और रास्ता दिखाता है. दैट इज ऑन नाइट टाइम वी ड्राइव द कार, pitch dark, 1,000 kilometers he traveled. How? Because he focused only after that distance where the floodlight of the car was showing the path. Once he reached that point of 100-200 meter, obviously next 200-100 meters are again illuminated. So too in spirituality. जितना रोशनी है उतना आगे बढ़ो, फिर से दिखता जाएगा. Okay. फिर in this way, मकारमपि आत्मनि चिद्घने परे विलापेत प्राज्ञमपि कारणम. Then the 51 second line we saw, सह अहम परम ब्रह्मा सदा विमुक्तिमतु विज्ञान दृक् मुक्तः उपादितः अमलः. I am that Amala Atma. I am that ever freed from the Upadi Wala Atma. I am that Kevala Atma. I am that Vijnana Druk Atma. I am that Sada Vimuktimat Atma. I am that Atma which is said as Param Brahma in the Upanishads and Vedanta. Evam, in this way, I am doing the 52nd shloka now. Sada, always, Jata Paratma Bhavanaha, who is created, who has created and maintaining Para Atma Bhavana. Earlier, Jiva Bhavana, Deham Ahamasmi, therefore Deha Bhavana, through Deha, one or the other individuality and relativity Bhavana, we were all entertaining in our mind.
Now all three avasthas, everything through merger in Omkara is dissolved. Abhi kya hai? Sada jata paratma bhavana. I am in that bhavana mood of para atma, that I am that supreme self, which was said in 43, 44 also, we saw a week back, which is said here also. Param Brahma sada vimuktimatu vijnanadruku upaditaha muktiha amalaha ityadi. So evam sada jata paratma bhavana. And that paratma bhavana, the meditation, contemplation on the self, more and more done, and we are able to apprehend that sublime subtle self. Result क्या होगा पता है कि स्व आनंद तुष्ट. Slowly, slowly, the self's ananda starts revealing. And it is so overwhelming, oh, so much infinite, complete, encompassing, that it gives one the tushti. Second is akhila parivismruta. In that bliss of the self, one is reveling. Anything other than the self, the not self, all of that is parivismruta. Everything is gone away from the attention. You know? When we have withdrawn our attention from the world through pranavopasana, the self is revealed. When we are reveling in the revealed self's bliss and contentment, even the reminiscences of anything other than self, if at all remain parivismruta, they are transcended. Aste. In this way, one starts gaining that experience, slowly, slowly stabilizes in it, finally gets rooted in it, established in it. Aste saha. And how is it that? Nitya Atma Sukha Prakashakaha. Always Prakashaka means experiencer of eternal bliss of the self. Nitya Atma Sukha. Eternal bliss of the self. Prakashakaha. Experiencer. He remains as. Such a one is called as Sakshad Vimuktaha. He is experiencing indirectly the moksha anumoti. There is no two, there is no upadhi, there is no multitude, there is no gross subtle causal, there is no any finite thing for putting him in the sense of bondage. Bondage is only a sense born out of ignorance. When the wisdom comes, that nonsense goes, sense prevails. That I am an infinite blissful self. Sakshadimuktaha. Example given, Achala Vari Sindhuvat, the water of the ocean, which never overflows out of the ocean. That's the Apuryamanam Achalam Shloka of Bhagavad Gita. The 70th, I think, of chapter 2. 70वां श्लोक, दूसरा अध्याय. So these words again and again, when we contemplate, remember, the feeling of it starts coming. But to do that, our first mana buddhi should come to ekagra bhumi. For that, whatever the reasons by which the chitta is going into kshipta moda vikshipta, those things we have to avoid. And whatever the upasanas, japas, when done, chitta becomes ekagra bhumi. Those things we have to do single pointedly, minimum for 12 साल. उस पे स्थित होने के बाद देना effortlessly studying such shastras in which Atma Swarupa Lakshanas are enumerated. Using any one of them, one can lift to one's contemplative height beyond which no need of even effortful contemplation, action of the chitta, but he will revel in the Atma Anubhuti. Vimukti. Sakshad Vimuktaha Achala Sindhuvat. Again, Evam. In this way, Sada Abhyasta Samadhi Yoginaha. For that yogi who is doing again and again the Samadhi Abhyas. Dekho, what is taught is Vedanta. But what word is used is Yogaka.
Abhyasta Samadhi Yogina. Pura Veda, Veda, because Vyasji himself has written Bhashyaman Patanjali Yoga Sutras. No, therefore Vyasji only is giving all this Adhyatma Ramayanam in the Brahmaanda Purana. Evam Sada Abhyasta Samadhi Yogina. एवं इन दिस वे सदा ऑलवेज अभ्यस्त अभ्यास करते रहने वाला प्रैक्टिस करने वाला समाधि योगिनः मीन्स हु इज पुटिंग धी इन द समस्थिति इन योगा वृत्ति निरोध संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि what it is called in that technical language the same word samadhi in vedanta it means the dhi has dissolved in the pure parabrahma that's called samadhi. And what is the dhi? Dhi is nothing but the sense of dichotomy in the undifferentiable pure consciousness. Like, what is a wave in water? Wave is nothing but always water. But a feeling of some otherness comes, no? Karana may be some shape. But suddenly we call a wave in the water. Is there anything called as wave apart from water that you use such a grammatical sentence that wave is the content and the water is the container, and in the container the water there is a content called wave. ध्यान से सोचना. As if water is different, wave is different. That different sense is called chitta. Chitta hi, in other language, dhi is called. When that is made sama, means merged in the consciousness, means when the sense of otherness is transcended, in which one without second conscious self alone is experienced. That is Vedantic Samadhi. In yoga, the dhi as such chitta is held on to, and the dhi or chitta vrittis are accounted, fought with, eliminated through all the abhyasa vairagya or tapasvadhyaya ishvara pranidhanani kriya yoga और यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ध्यान समाधि अष्टांग योग. योग में ऐसे पीछे पड़ के सारे वृत्तियों को, उसके मूल कारण संस्कारों को, ये सब जिस भूमिका में होते हैं उस चित्त को सबको भगा भगा के इन योगा एंड सांख्य नाश नहीं करते, मूल प्रकृति में वो मर्ज कराते. बिकॉज फॉर ए योगी एंड सांख्य पर्सन he wants the prakriti to remain always. Because the other jivas are not yet got moksha, many are in samsara, the whole prakriti always is there. इसके लिए नहीं है जो जीवन मुक्त हो चुका है. One of the sutra also comes in Yoga Darshanam, Visa. For others it continues. In Vedanta ऐसा नहीं होता. When one reaches Brahman, Brahman alone he experiences. He can't answer any question because you will have a question regarding something other than Brahman, which is not there in his experience. है ना? Vedanta Anubhavi will not answer the question, not because he can't answer question, because there is no answer. Because question itself is wrong. That's a very sublime thing. Don't get troubled by this explanation. Okay. Evam, in this way, sada abhyasta samadhi yoginaha. So what is the abhyasa hai samadhi yoga ka? The two things. One, through the pranava upasana, sthura sukshma karana, jagra sapna sushupti are totally merged. Okay. At second level, the pure Atma Vastus Lakshanas are contemplated upon. In that contemplation, that Atma Vastu of that nature or Anubhava reveals. When the revelation happens, that is called as Samadhi Yoga, Atma Samadhi Yoga. है ना? सदा अभ्यस्त समाधि योगा. उनको धी को समाने से अपने स्वरूप से योग हो गया. When he merged his dhi, then he experienced his own self. That's called Samadhi Yoga.
It's so simple to understand, na? Like of one action related thoughts in जागृत अवस्था, आप उसका समाधि कर रहे हो तो दूसरे फील्ड के थॉट्स एक्शंस का योग हो रहा है ना. लाइक ऑफ व्यवहार you have done the samadhi when you came to class. Therefore, the class में जो वृत्तियां हैं उसका योग हो रहा है. आप आफ्टर द क्लास इज ओवर इसका गोरी बनाते हैं हम समाधि, और यो फिर लोक का वृत्तियों का योग होता है. सो टू एंटायर जागृत अवस्था का समाधि करते हैं तो स्वप्न का योग होता है. जागृत स्वप्न दोनों का समाधि करते हैं तो सुषुप्ति का योग होता है. इन तीनों का समाधि बनाओ तो तुरीय का योग होता है. समाधि योग शब्द आई एम एक्सप्लेनिंग. एवं सदाभ्यस्त समाधि योगिना. देखो ये इंपॉर्टेंट. The one now he has no other business in world other than samadhi yoga. Such person therefore has no business in the world. He goes to such secluded place and is always आंख मूंद कर ली, बंद करके आवृत चक्षु हो, desiring that infinite self amrutvam ichan, is only in the repeated contemplation on such slokas which dissolve the anatma, reveal the atma. ये उसी में रहेगा हमेशा. एवं निरंतराभ्यस्त एवं सदाभ्यस्त समाधि योगिना. यही शंकर भगवान एवं निरंतर अभ्यस्त ब्रह्मास्मि वासन हरत्य विद्या विक्षेपान रोगानि वरसायनम. So many things he talks. Just like what is given here, you will see in all Prakarana Granthas of Bhagavan. So एवं सदाभ्यस्त समाधि योगिनः. उससे क्या होगा? निवृत्त सर्व इंद्रिय गोचरस्य ही. What is the proof that you are growing in samadhi yoga? Nivritta sarva indriya gochara. So the sense objects and the corresponding sense organs slowly they are nivrittu ho rahe hain. They are slowly becoming atrophied to reach to the self. After reaching the self, again they will be used if required. So in Adhyatma Ramayana, especially this portion of Rama Gita, every word is $1 million precious, million rupee precious, because we are also now becoming rupee each. 50 साल के बाद you will see 1 rupee is $20. Now $1 is 87 rupees, 87.5. लटकता रहता है 80 से 92 के बीच में, 89, 90. Every word is so valuable. If one can spare time with the capacity of the intellect gained through various upasanas to contemplate and gets into the deeper understanding of them, he is in Deepavali every day, Dashahara every day. Because मुक्ति देने वाला ज्ञान रिवील जब हो रहा है, बौद्धिक ज्ञान से ही वो आनंद. Then this knowledge, when it is translated into experience, the seat of meditation, oh, सोचने से इतना आनंद. But still, why we don't go there is, still we have terrible vasanas for the world, delusion that the world is real. इसको somehow जला के राख कर देना. That is why the second one. What is that? Nivritta sarva indriya, nivritta sarva indriya gocharasya. The one in whom all the indriyas and indriya gochara vishayas are nivritta. So what is the sara here? What is the rahasya here? Rahasya is only when we attend, then the indriyas, and for the indriyas as a khurak, the vishayas get protruded or projected. And so simple it is to understand. Like when we become hungry, then only you remember stomach, and then only you remember the tongue, then only you remember the food, then only you remember the kitchen or dining table, then only the mother or whoever gives the food, wife or son, daughter, कोई भी हो. तब तक कहाँ थे वो लोग? उनका ख्याल भी नहीं आता. Like when I am talking and you are listening, let us say imagination. Do you remember your dinner and all of that? नहीं स्वामी, हम तो सामने रखकर खाते हुए सुनते हैं. मध्य मध्य समझ में यहाँ भी ऑनलाइन
आपको तो दिखता नहीं, मेरे को सारे गोल गोल में प्लेट दिखते हैं, आप उसमें बैठे हो दिखते हैं मुझे, दो दो अक्षर, दाल चावल रोटी सब्जी. Don't remember, no? So when you give value, then they got projected. When you become aware, from the awareness, all of them have come. And at that time, where is the whole Vedanta gone when you are in the dining table? You are not aware about it. Therefore, it is not there. Therefore, Siddhantik Vedanta Jnana or Vyavaharik Sabukuchu is, is coming out only when you become aware of it. That is why Nivruta Sarva Indriya Gochara means what? It's a knowledge, remember. It's a pure, clear knowledge of the process, which we lucky people are studying so exhaustively, thoroughly in our Aitareya Upanishad. भगवान ने एक क्षण किया तो सृष्टि आ गई. भगवान ने एक क्षण किया परमात्मा तत्व का सृष्टि का लय हो गया. तो वेयर इज द सृष्टि? ओनली इन द ईक्षण. एंड वेयर इज द डिसोल्यूशन ऑफ द सृष्टि? अगेन इन द ईक्षण ऑफ द परमात्मा. स्वयं का ईक्षण करो. Like, just become aware of your mind. The whole world is gone. You become aware of the self, the mind is gone. Become aware of the mind, the self is forgotten, mind is remembered. Become aware of the world, mind becomes a substratum, but the whole world becomes again aware by us. See the play which is happening every moment. Remember the son remembered. That time, daughter-in-law, all other not remembered. And remember the daughter, then the others are forgotten. It's forgotten to such an extent as if they are not there. And remembered to such an that as if they are there. Whether they are there or not, it depends on you remember and don't remember. That's called vritti of the mana, vritti of the indriyas. Therefore, a Vedanti who comes up to this level, for him the whole world is in the mind. The mind is in the ignorance of the self. He has no value given to how much ever substantial thing, all that. Like when you go to children's game place, children get excited by all that. बट व्हेन द दादा आल्सो गोज विद दैट चाइल्ड, उनको वो सारा देखकर झूम जाओ, उनको कुछ थॉट आता भी नहीं टू प्ले करने को, बिकॉज ही हैज रीजन अबाउट, ही इज इन ए हायर स्टेट ऑफ अवेयरनेस दैन ग्रैंडफादर. देयरफॉर फॉर द चाइल्ड वो गुब्बारे फोड़ेगा, वो पिस्तौल से या रिंग फेंकेगा या कुछ कुछ, उसको ही सो एक्साइटेड. व्हेन द दादू वाज आल्सो ऑफ दैट एज, ही वाज आल्सो एक्साइटेड एट दैट, बट नाउ ही हैज grown. So to a Vedantin, whole world is a cinema, a drama, a projection. That's the greatest outcome of the Vedanta. While involving duly according to Dharma, yet knowing that it is a play going on, neither to lose anything nor to gain anything. A Vedanti comes to that level. This is called actually freedom from the world. मजा आता है, एक ऐसी मेच्योरिटी आ गई था. Like example, when you know the whole samsara is because of ragadvesha, and when you rise above ragadvesha, how laughing, lovely, smiling our life becomes. ना कोई किसी के भीतर राग है, ना कोई द्वेष है. It's a revelation. Till that time we didn't know and we were lost in ragadvesha and कबाड़ बना के रखा अपने जिंदगी को. कबाड़ा या कबाड़, कचरा. Once it clicks, all the dust and dirt gone, no? Like at the body level, take bath, the dust and all of them gone. Or take medicine, the disease gone, you are at ease. So when the Jnana goes on coming, subtler one, all the gross things is found to be no meaning. So Nivrutta Sarvendriya Gocharasahi, then Vinirchita Ashesha Ripoho. And also en route, you will have to conquer all the 6 Shatrus of Kama, Krodha, Lopa, Moha, Matsarya. To such one, Sada Drushyo Bhaveyam, Jita Shadguna Atmanaha, the one who has conquered Jara, Mrityu, Asana, Pipasa, Shoka, Moha of Annamaya, Pranamaya, Manomaya, and the one who has conquered all the 6 enemies, and the one whose Indriyas are fully withdrawn, along with the Indriya Vishayas, and therefore the one who is established in Atma Samadhi Yoga, for him, Drushyo Bhaveyam Chidam, to such one. The meaning of this sloka is Yatra Yatra Manoyati Tatra Tatra Samadhi. For such a person, wherever he sees, he will see me only.
देखो दिस श्लोका नीड्स 10 मिनट का एक्सप्लेनेशन. जस्ट लाइक दैट आई कैनॉट बी सेटिस्फाइड बाई सेइंग सम मीनिंग. तो एक्चुअली है अल्टीमेट गोल हाईएस्ट साधना, लोअर साधना, लोएस्ट साधना, नीचे से ऊपर, नीचे की लाइन से ऊपर लाइन तक यहाँ साधना फिर से दिखाया. दैट वी विल स्टडी टुमारो. ओके, एक दिन 2 या 3 श्लोक में हो जाए, ओनली 20 मिनट्स वी आर डूइंग ना, तो काफ़ी है. बिकॉज द सब्जेक्ट बीइंग वेरी सब्लिम, वेरी हैवी, ओवर डोसेज देने से आप ना बिना कमरे में जाए क्लास में सो जाते हो. क्यों? आपको सुलाऊं मैं? हमें तो इधर आपको रुलाने के लिए हूँ, सुलाने के लिए थोड़ी. इसलिए आपको बुला के थोड़ा ही बताते हैं. कल हम बाकी दें. ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो परम ऋषिभ्यो परम ब्रह्मणे श्रुतिमात्रे ओम तत्सत्. ब्रह्मार्पणमस्तु. ओम. बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय. ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय धन्वंतरे अमृतकलशस्थाय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्री महाविष्णवे नमः. ओम भाग्याब्धि चंद्रिका भक्त चित्तके गणागण रोगवरत दम्भोलिर मृत्युदार कुठारिकाय नमो नमः. ओम नासै रोगरे वीरा जपतन तनोत वीरा. ओम श्री हनुमद्वीराय नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते ओम श्री हनुमते नमः. ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय. ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदक्षाय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्. ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च. ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदक्षाय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्. ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च. ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्णदक्षाय धीमहि तन्नो नारसिंहः प्रचोदयात्. ओम नमो भगवते श्री लक्ष्मी नारसिंहाय प्रह्लादाय च. राम 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 राम. Bala Trivara Sundari 600 to 700. Nowadays I have reduced the volume as well as speed of satsanga because only on the proof that no energy remains permanent with us. As we grow in age, capacities get reduced. It's a proof. Khaskar from last 4 years, when every day 7 hours we are speaking. In that way, 6,000 classes, 8,000 hours. If we see, है ना, एटलीस्ट 7-8,000 एक एक क्लास का 1 घंटा 10 मिनट तो हो रहा है. तो इससे ज़्यादा भगवान कहाँ देंगे शक्ति बोलने को. अगर है तो भी आगे भी जब तक जिंदा है बोलते ही जाना है. तो इसलिए कंटेंट रिमेनिंग सबलाइम, सेम, ब्यूटिफुल, trying to conserve the energies
And slowly we are beautifully developing, enjoying our satsangas. All is for our own good. Good, you are all understanding, cooperating. All that punyam is yours only. So, Om Atashri Bala Tripura Sundari Matu Sahasranamavali 600 onwards. Om onwards. Om Shivarupinyai Namaha Om Raginyai Namaha Om Ranjanyai Namaha Om Ramyai Namaha Om Rajanyai Namaha Om Rajanikarayai Namaha Om Vishwambharayai Namaha Om Vinitayai Namaha Om Ishtaye Namaha Vidhatriye Namaha Vidhivallabhaye Namaha Vidyotinyai Namaha Vichitrarthaye Namaha Om Vishwadhyaye Namaha Vidhavidhaye Namaha Vishwaksharaye Namaha सरसिकाय नमः विश्वस्ताय नमः मतिविचक्षणाय नमः ओम ब्रह्मयोन्यै नमः महायोन्यै नमः कर्मयोन्यै नमः ओम त्रयीतनवे नमः ओम हाकिन्यै नमः ओम हारिण्यै नमः ओम सौम्याय नमः ओम रोहिण्यै नमः ओम रोगनाशन्यै नमः ओम श्रीप्रदाय नमः ओम श्रियै नमः ओम श्रीधराय नमः ओम श्रीकराय नमः ओम श्रीमत्यै नमः ओम श्रियाय नमः ओम श्रीमात्रे नमः ओम श्रीकर्यै नमः ओम श्रेयसे नमः ओम श्रेयस्यै नमः ओम सुरेश्वर्यै नमः ओम कामेश्वर्यै नमः ओम कामवत्यै नमः ओम कामगिर्यालये स्थितायै नमः ओम रुद्रात्मिकाय नमः ओम रुद्रमात्रे नमः ओम रुद्रगम्याय नमः ओम रजस्वलाय नमः ओम अकार षोडशान्तस्थाय नमः ओम भैरवाय नमः ओम आह्लादिन्ये नमः ओम पराय नमः ओम कृपादेहाय नमः ओम वरुणाय नमः ओम नाथाय नमः ओम सुधाबिन्दुसमाश्रिताय नमः ओम काल्ये नमः ओम कामकलाय नमः ओम कन्याय नमः ओम पार्वत्यै नमः ओम पररूपिण्यै नमः ओम मायावत्यै नमः ओम घोरमुख्यै नमः ओम वादिन्यै नमः ओम दीपिन्यै नमः ओम शिवाय नमः ओम मकाराय नमः मातृचक्रेश्यै नमः ओम महासेनाय नमः ओम विमोहिन्यै नमः ओम उत्सुकाय नमः ओम अनुत्सुकाय नमः ओम रुष्टाय नमः ओम ह्रीङ्कार्यै नमः ओम चक्रनायिकाय नमः ओम रुद्राय नमः ओम भवान्यै नमः ओम चामुण्डे नमः ओम ह्रीङ्कार्यै नमः ओम सौख्यदायिन्यै नमः ओम गरुडाय नमः ओम गारुड्ये नमः ओम ज्येष्ठाय नमः ओम सकलाय नमः ओम ब्रह्मचारिण्ये नमः ओम कृष्णांगाय नमः ओम वाहिन्ये नमः ओम कृष्णाय नमः ओम खेचर्ये नमः ओम कमलाप्रियाय नमः ओम भद्रिण्ये नमः ओम रुद्रचामुण्डाय नमः ओम ह्रीङ्कार्ये नमः ओम सौभगाय नमः ओम ध्रुवाय नमः ओम गरुड्ये नमः ओम गारुड्ये नमः ओम ज्येष्ठाय नमः ओम स्वर्गदाय नमः ओम ब्रह्मवादिन्ये नमः ओम पानानुरक्ताय नमः ओम पानस्थाय नमः ओम भीमरूपाय नमः ओम श्री बाला त्रिपुरा सुंदरी मात्रे नमः. Let us do the Surabhi Stotram. Okay, that is Kamadhenu's another name और कामधेनु के संतान को सुरभि कहते हैं, which is the wish fulfiller, wish fulfilling cow, wish fulfilling tree, wish fulfilling mani, कामधेनु कल्पवृक्ष चिंतामणि. These are there in our Purana इतिहास. ओम श्री सुरभि स्तोत्रम महेंद्र उवाच नमो देव्यै महादेव्यै सुरभ्यै च नमो नमः गवाम्बीजस्वरूपायै नमस्ते जगदम्बिके नमो राधाप्रियायै च पद्मांशायै नमो नमः नमः कृष्णप्रियायै च गवां मात्रे नमो नमः कल्पवृक्षस्वरूपायै सर्वेषां सततं परं श्रीदायै धनदायै च बुद्धिदायै नमो नमः शुभदायै प्रसन्नायै गोप्रदायै नमो नमः यशोदायै सौख्यदायै धर्मज्ञायै नमो नमः स्तोत्रस्मरणमात्रेण तुष्टा हृष्टा जगत्प्रसूः आविर्बभूव तत्रैव ब्रह्मलोके सनातने महेन्द्राय वरं दत्त्वा वाञ्छितं सर्वदुर्लभं जगामसा च गोलोकं ययुर्देवादयो गृहं बभूव विश्वं सहसा दुग्धपूर्णं च नारद दुग्धाद्घृतं ततो यज्ञः ततः प्रीतिः सुरस्य च इदं स्तोत्रं महापुण्यं भक्तियुक्तः च यः पठेत् स गोमान् धनवांश्चैव कीर्तिवान् पुण्यवान् भवेत् सुस्नातः सर्वतीर्थेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः इह लोके सुखं भुक्त्वा यात्यन्ते कृष्णमन्दिरं सुचिरं निवसेत् तत्र कुरुते कृष्णसेवनं
न पुनर्भवनन्तस्य ब्रह्मपुत्र भवे भवेत् इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे महेन्द्रकृतं सुरभिस्तोत्रं सम्पूर्णम्. Now the Prithvi Stotram. Bhagavan Vishnu himself does. Om Atha Prithvi Stotram Shri Vishnuruvacha Yajnasu Om Yajnasu Karajaya Tvam Jayan Dehi Jayavahe Jaye Jaye Jaya Dhare Jaya Shile Jaya Prade Sarvadhare Sarva Bije. देखो पृथ्वी स्तोत्रम आई हैव सेंट फर्स्ट विच वी आर डूइंग नाउ. उससे पहले जो किया सुरभि स्तोत्रम. भेजा है देख लो. स्वधा स्तोत्रम आल्सो आई विल डू टुडे. बहुत टाइम है. ज़्यादा भेजूं तो you'll get confused. सो आज जितना करेंगे उतना. ओम अथ श्री महाविष्णुकृत पृथ्वी स्तोत्रम. ओम यज्ञसूकरजाया त्वं जयं देहि जयावहे जये जये जयाधारे जयशीले जयप्रदे सर्वाधारे सर्वबीजे सर्वशक्तिसमन्विते सर्वकामप्रदे देवी सर्वेष्टं देहि मे भवे सर्वशस्यालये सर्वशस्याढ्ये सर्वशस्यदे सर्वशस्य हरे काले सर्वशस्यात्मिके भवे मंगले मंगलाधारे मंगल्ये मंगलप्रदे मंगलार्थे मंगलेशे मंगलं देहि मे भवे भूमे भूमिपसर्वस्वे भूमिपालपरायणे भूमिपाहंकार रूपे भूमिं देहि च भूमिदे. इदं स्तोत्रं महापुण्यं तां सम्पूज्य च यः पठेत्. इदं स्तोत्रं महापुण्यं तां सम्पूज्य च यः पठेत् कोटिकोटिजन्म जन्म स भवेत् भूमिपेश्वरः. भूमिदानकृतं पुण्यं लभते पठनात् जनः भूमिदानहरात् पापात् मुच्यते नात्र संशयः. भूमौ वीर्यत्यागपापात् भूमौ दीपादिस्थापनात् पापेन मुच्यते प्राज्ञः स्तोत्रस्य पाठनात् मुने. अश्वमेधशतं पुण्यं लभते नात्र संशयः. इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे विष्णुकृतं पृथ्वी स्तोत्रं सम्पूर्णम्. Through these stotrams we are touching one or the other Puranas, the studying of which may not be possible to us in this life. किसने देखा ब्रह्मांड पुराण ब्रह्मवैवर्त पुराण? It's because we are studying these stotras and Adhyatma Ramayana इत्यादि we are able to do. नहीं otherwise कहाँ? Now ओम अथ स्वधा स्तोत्रम ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारणमात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यः वाजपेयफलं लभेत्. स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं यदि वारत्रयं स्मरेत् श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च. श्राद्धकाले स्वधा स्तोत्रं यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्धशतानां च पुण्यमेव न संशयः. स्वधा स्वधा स्वधेत्येवं त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां स लभेत्
साध्वीं पुत्रं गुणान्वितं पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्विजजीवनरूपिणी श्राद्धाधिष्ठातृदेवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा बहिर्गच्छ मन्मनसः पितॄणां तुष्टिहेतवे सम्प्रीतये द्विजातीनां गृहिणां वृद्धिहेतवे नित्या त्वं नित्यस्वरूपासि गुणरूपासि सुव्रते आविर्भावस्थिरो भावः सृष्टौ च प्रलये तव ॐ स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षट्प्रशस्ताश्च कर्मिणां पुरासीस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतोरसि स्वधात्मानं कृतं तेन स्वधा स्मृता इत्येवमुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ च सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां सम्प्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः स्वधा स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेदपाठफलं लभेत् इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखण्डे ब्रह्मा कृतं स्वधा स्तोत्रं संपूर्णं. We will have यज्ञ पुरुष स्तोत्र sorry दक्षिणा स्तोत्रम मनसा स्तोत्रम and these two करो तो ये हो जाएंगे. then दुर्गा स्तोत्र नाम स्तोत्रम will be there. then some of them. तो 1 2 3 दिनों में ये ग्रंथ हो जाएगा. I am so tempted and inspired after chanting them कि इन स्तोत्रों पे भी सत्संग होना चाहिए. एक एक घंटा एक एक स्तोत्र हो जाएगा 40-50. So they're all there stocked up in YouTube. I myself, when I become very old, going to die, that time while listening these things, I can put my mind in God. If any others also listen and make use of it, that is welcome. Thank you. Om. न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् तस्य भासा सर्वमिदं विभाति. ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्. ॐ दासरथाय विद्महे सीतावल्लभाय तन्नो रामभार्यायै विद्महे. ओम येरिमे ओम कात्यायन कन्नकुमारं संसकं महादेवी च आ ब्रह्मलोकादाशेष नमो ब्रह्मादिन्यो बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय. राधावर कृष्णचंद्र भगवान उमावर चंद्रचूड़ भगवान की जय. बोलो भाई समस्त ऋषि मुनि गुरुदेवता मंडल की जय. परब्रह्म परमात्मा की जय. श्रीमद् भागवत रामायण महाभारत उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र योगाशिष्ट पातंजलि योग दर्शन अध्यात्म रामायण सूत संविदा शिवपुराण समस्त सनातन धर्म वैदिक संस्कृति श्रुति स्मृति पुराण इतिहास शास्त्र की जय. वेद व्यास सुखदेव सूतादि भागवताचार्य वेद व्यास वाल्मीकि विश्वामित्र तुलसीदास रामायणाच हिरण्यगर्भ कपिल पतंजलि व्यासादि योग दर्शनाच बोलो भाई सब संतर की जय. गुरुनाथ महाराज की आजकल नम पार्वती वदे हर हर महादेव हर सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तन गोविंद गोविंद जानकी जीवन स्मरण जय राम राम. अम्बे अम्बे आदिवराक्ति माता की जय. हा हा. स्वाधा माता की जय. स्वाहा माता की जय. सुधा माता की जय. सुरभि माता की जय. बोलो भाई सब संतन की जय. समस्त श्रोता भक्त साधक सेवक उपासक जिज्ञासु धर्म संस्थापक मंडल की जय. भारत माता की जय. सनातन धर्म वैदिक संस्कृति की जय. साना आध्यात्मिक मार्ग की जय. शुभम. ओम श्री बाला त्रिपुरा सुंदरी माता की जय. हरि ओम. Yes, one by one.